तो आज हम लोग फर्स्ट एडजेक्टिव्स के बारे में सीखेंगे और उसके बाद विल मूव ओवर टू प्रोनाउंस। तो एक सेंटेंस में एडजेक्टिव्स, a sentence has a noun, of course, sentence formation in English language, उसमें noun रहेगा. So if in a sentence a noun is there, any word that describes that noun or describes a pronoun, that is noun के बदले में जो use होता है, right? When such a case happens, any word in a sentence that describes जो noun या pronoun को describe करने के लिए use होता है, उसे हम लोग adjective बोलते हैं. So अगर definition देखें adjective का, so a word used with a noun to describe or point out the noun. The noun मतलब उधर कोई person भी हो सकता है, कोई animal, thing या place, और किसी चीज की quantity बताता है, किसी noun की quantity बताता है, तो उसे हम लोग adjective बोलते हैं. So adjective is a word that is used with a noun or a pronoun to describe something, to add on to the nouns. So adjective का literal meaning है added to. So किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ. तो इधर किसके साथ जुड़ा होता है adjective? जुड़ा होता है, इसका मतलब नहीं दोनों एक साथ रहते. It means कि describe करता है उसे. तो हम लोग उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, राइट? तो अगर मैं एक सेंटेंस लूं, the lazy boy was punished. तो इधर नाउन क्या है? बॉय. बॉय इज द नाउन हियर. कैसा बॉय? lazy. So lazy is the noun, right? So sorry, so lazy is the adjective. क्यों? क्योंकि जो noun है boy, boy को describe कर रहा है the word lazy, and that's why lazy becomes adjective. जो word noun को describe करे, यहाँ पे जैसे boy को describe कर रहा है वो है lazy, so lazy is the adjective. Okay, so if we move on, some adjectives, like adjectives के बहुत सारे types होते हैं. So majoritarily, mainly, there are 4 types. Adjectives of quality, जिसे हम लोग descriptive adjective भी बोलते हैं, या फिर adjectives of quantity, adjectives of number or numeral adjectives, and finally demonstrative adjectives. ठीक है? So इनमें से किसका कौन सा टाइप है, कौन से एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, लेट्स लुक इनटू दैट, राइट? सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं, व्हाट डज दैट डू? इट shows the kind or quality of the noun. So एक सेंटेंस में जो नाउन है उसकी क्वालिटी कैसी है, द क्वालिटी ऑफ द नाउन इज, उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. सो अगर इफ आई से राज इज एन ऑनेस्ट मैन, Raj is an honest man, right? So Raj is a noun here. Man is also a noun here. So Raj, what kind of a man Raj is? You know, you can ask the question, what kind of a man Raj is? An honest man, right? ये Raj की quality दिखा रहा है, a quality of Raj, a good quality of Raj. So honest. So यहाँ पे जो adjective use हुआ है, that is honest, this is an adjective of quality or descriptive adjective, right? So एक और example लूं. The foolish old crow tried to sing. The foolish old crow tried to sing.
यहाँ पे क्रो को डिस्क्राइब किया जा रहा है एज फूलिश एंड ओल्ड। सो ये क्रो की क्वालिटी बता रहा है और कैसा है क्रो, हाउ इज द क्रो, इट इज फूलिश एंड इट इज ओल्ड। सो फूलिश ओल्ड क्रो, सो दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, right? For example, if I say American players or say Indian cricketers, these are generally classified as adjectives of quality, right? अब adjectives of quantity क्या है? What are adjectives of quantity? Now यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा है कि ये it is going to say कि कितना है कुछ चीजें, right? It's gonna give you a measurement. So adjectives of quantity show how much of a thing or how much of a thing is meant. Like एक सेंटेंस में जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज यूज्ड, इट शोकेसेस कि जो नाउन है उसकी क्वांटिटी क्या है, आर वी क्वांटिफाइंग दैट नाउन। फॉर एग्जांपल, आई एट सम राइस, some rice, कितना rice, ना some rice, right? How much rice? So if you ask the noun in a sentence the question of how much and you get an answer to that question, that is an adjective of quantity. I'll give you an example. He did not eat any food. He did not eat any food. Now we can see जो word any है वो food को describe कर रहा है. So we ask, how much food? He didn't eat any food. So that means it's an adjective of quantity. Or if I say, he has very sharp intelligence. He has very sharp intelligence. How much intelligence does he have? Very sharp intelligence. Adjective of quantity. If I give another example, you have no sense. You have no sense. How much sense does he have? No sense. You can answer the question, how much, right? So this is adjective of quantity. ये we need to keep this in mind कि quantity है, इसका मतलब there are no numbers कि 5 kgs or 18 dolls, 19 books, ये चीजें adjectives of quantity के अंदर नहीं आता. These do not fall under the division of adjective of quantity. फिर ये किसके अंडर में आता है? It comes under numeral adjectives or adjectives of number. Very easy. They had 2 pens. They had 2 pens. How many pens did they have? 2 pens, right? So 2, it's a number. It's a number. So they had 2 pens. It's numeral adjective. Or if I give an example, you made, or Ria made 5 baskets. 5 is a numeral adjective, right? Now numeral adjective के भी types है. So एक है definite numeral adjectives. Definite numeral adjectives मतलब जहाँ पे एक number specified है, 1 2 3 4 5 6 first second third fourth fifth sixth seventh eighth 100th 1200th 1,000,000 6,000. So these are definite numeral adjectives. दूसरा न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर में जो टाइप है, दोज आर इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. तो इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का क्या मतलब है? which do not showcase an exact number, like all people must die, nobody survived that crash,
So all, it doesn't show an exact number, but it is quantifiable. You can quantify it. So they are indefinite numeral adjectives. And the third one is distributive numeral adjective. For example, either pen will do. Neither of them are correct. What इसका मतलब क्या है? It means कि it refers to each one of a number. So either, neither, every, each, these are distributive numeral adjectives. Why? Because numbers are distributed, right? So the in English grammar, it gets very confusing. At times बहुत confusing हो जाता है कि numeral adjective कौन सा है और adjective of quantity कौन सा है, because indefinite numeral adjectives or objectives of indefinite numeral adjectives and adjectives of quantity are very similar. दोनों बहुत similar है, right? But इनका डिविजन हम लोग कैसे करें कि कौन सा एडजेक्टिव क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. So it depends on the use. I'll give you an example, right? I ate some rice. If I say I ate some rice, उधर पे rice को describe कर रहा है some, right? इधर I ate some rice, some is an adjective of quantity. Why? Because rice को you cannot count. You cannot count कि ये एक grain है, एक दूसरा grain है, ये दूसरा तीसरा grain है, ये 400 grain है. You cannot. So rice measured ही some, या फिर एक rice को आप मुट्ठी में ऐसे करके नहीं बोल सकते कि इधर 10 rice grains है. Like ऐसे हम लोग sentence में use नहीं करते हैं. So that's why it's an adjective of quantity there. So a denominator of rice कि rice को कैसे weigh करते हैं, rice को कैसे हम लोग quantify करते हैं, उसके लिए हम sum use कर रहे हैं यहाँ पे. So it's adjective of quantity. उधर ही अगर मैंने बोला कि some boys are cunning, some boys are cunning. So इधर some is not adjective of quantity. It's a adjective of number or numeral adjective. Why? Because if you want, you can count the boys. If you want, you can put a percentage on it, right? So like that. At times it gets very murky. दोनों के बीच में difference समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. But अभी at present English grammar में there is no hard and fast separation between adjective of quantity and adjective of number, right? So lastly, जो fourth type है यहाँ पे, we have demonstrative adjective, right? So demonstrative adjectives थोड़ा सा different है. How? Demonstrative adjectives point out which person or thing is meant. It points out, ये दिखाता है कि कौन क्या है, किससे क्या हुआ है, right? It points it out, it demonstrates. For example, this boy is cleverer than Rajiv. This boy, ये particular boy is cleverer than Rajiv, not any other person, this boy. Or if I say these mangoes on the table are really sweet. कौन से mango sweet है? These mangoes. So they're describing the mangoes, these mangoes. So demonstrative adjectives are pointing out these. These is pointing out ye mangoes are really sweet, right? So like that. An easy way to understand is that at times if you ask the question which mangoes are sweet,
These mangoes are sweet. Which boy is stronger than Rajiv? This boy is stronger than Rajiv. Right? So if you ask the question which to the noun in the sentence and you get an answer, the answer is demonstrative adjective. Right? Finally, there is another type of adjective which is also used, but इसे हम लोग अलग से बहुत बार classify नहीं करते. But a bonus one, those are known as interrogative adjectives. Interrogative adjectives. Right? अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से आप तो समझ ही गए होंगे क्योंकि उधर एक क्वेश्चन होगा. There will be a question, there will be a WH, that it's either starts with a W or it starts with an H. So what, how, which, where, इधर ऐसे जो adjectives अगर use होते हैं sentence में इसमें like which one of the bottle, which bottle is yours? The bottle, which bottle is yours? So which is the interrogative adjective. Or if I say whose book is this? Whose is the interrogative adjective here, right? So interrogative means question. So जो हम लोगों को पता है interrogative मतलब question. So अगर हम लोगों को कुछ sentences ऐसे दिखते हैं like whose book is this, which water bottle is yours, what manner of a man is he, यहाँ पे they are being described by a WH word, that is what, which, whose, how, when. These are interrogative adjectives, right? So if we do like a quick questions कि इस sentence में in sentences में adjective कौन से हैं? Okay, right. The ship sustained heavy damage. The ship sustained heavy damage. यहाँ पे कौन सा adjective है? Heavy. Heavy is the adjective here, but it is an adjective of quality. Why? Because it is describing. It is describing the noun here, describing the quality, or it's describing the kind of the object, that is the noun here. So kaisa damage na? Heavy damage, right? Like that. I I've called him multiple times. I've called him multiple times. I've called him multiple times. May multiple is the adjective here. Is it quantitative or is it numeral adjective? It is numeral adjective. Because if you can count, and you can count it in numbers, right? 1, 2, 3, 4, 10 बार, 15 बार, कितने बार call किया, right? It can still be counted in numbers without any assisted a metric of measurement, right? दूसरा, if I say what time is it? What time is it? Right? What time is it? ये तो easy है. This is an interrogative adjective. Why? Because time को कैसे describe कर रहे हैं? What time is it? What से? So it's a WH word. So WH word अगर use होता है, so we call it interrogative adjective, right? Next, Sarah won the first prize in a race. First prize, right? First is the adjective. Prize को describe कर रहा है. कैसा prize? Now first prize. Now first prize, first is of course the adjective of numbers or numeral adjective, but numeral adjective के भी type होते हैं. So numeral adjective के अंदर में this is a definite numeral adjective. Why? Because एक definite number की तरफ point कर रहा है.
right? So definite numeral adjective kya hai? When there is the number mentioned. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,367, like that, or first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, like that. So this is a numeral definite adjective, right? Okay. If we take another example, Rita is wearing a blue dress. Rita is wearing a blue dress. So Rita is wearing a blue dress में adjective क्या है? Blue, because it's describing the dress. So ये dress की एक dress का type बता रहा है, what kind of dress, एक quality बता रहा है कि कौन से color का है ये dress. So this is an adjective of quality. Why? Because it is describing, it is kind of telling me the quality, the kind, the type of dress, yeah, the kind or the type of the noun जो कि यहाँ पे dress है. So the answer to that is blue. So it is an adjective of quality, right? Okay, moving on. So there is also a fun, a fun exercise at times nouns, जो nouns होते हैं, they can turn into adjectives. हम किसी भी चीज के noun form को adjective के we can turn it into adjective. It can become an adjective. So for example, boy is a noun. In adjective form, it is boyish. Boyish. Girl is a noun. It can be very well called as girly or girlish, right? Like that. Or storm, like storm is a noun, but stormy is an adjective. Today, we had a stormy weather. We had a stormy weather. So weather noun hai, weather को describe कर रहा है stormy. Stormy is an adjective form of the noun storm. So adjectives, so nouns can at times be pretty much turned into adjectives, which is a pretty fun exercise to do. So if I give you some more other really these are the ये words हम लोग day to day में बहुत use करते हैं, just we don't know the type. So if I say dirt, धूल, there's a lot of dirt in the house, dirt is a noun there, धूल है, dirt is a noun. But if I say, oh, this place is very dirty, how is the place dirty? Place को describe कर रहा है word dirty, तो वहां पे dirty is an adjective. Dirty dishes, dirty plates, dirty dirty water bottle, कुछ भी, right? So dirt जो कि noun है, when it becomes adjective, the adjective is dirty. So क्या क्या example लिए हमने? Boy is boyish, storm is stormy, dirt is dirty, right? If we take another example, for example, hope, or care. For example, care. Okay, care. Now, care is an abstract noun. If I use it as an adjective, it becomes careful. Again, glory. Glory is a noun. It's an abstract noun. Glory is a noun. The adjective form is glorious, 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 right?
Man is a noun. The adjective form will be manly. Manly. Uh, Another example will be envy. Envy is like the feeling of jealousy is envy, right? Envy is a noun. Again, it is an abstract noun. Envy is an abstract noun. So, but envy can also be turned into an adjective. You know, when we are trying to describe a person who's jealous, we say an envious person or a jealous person bhi chalta hai, but we also, there is another word, an envious person. So envious is the adjective form of the noun envy. All right, good. ये हो गया some nouns that you can turn into adjective and use them in sentence. There are some verbs as well that can be turned into adjectives as well. Like talk. Talk is a verb, right? Talk, talking, baat karna is a verb. But talkative is an adjective. For example, he talks real loud. वो बहुत जोर से बात करता है. यहाँ पे talk is a verb. बात करना is a verb. But if I say he's a very talkative person, I'm describing him as talkative. कि वो बहुत ज़्यादा बात करता है. His quality, I'm describing the noun as talkative. So यहाँ पे talkative is an adjective. So talk जो एक verb है, उसका adjective form है talkative. Talkative. So talk, talkative, right? Another example will be say move. Move. Move किसी चीज को हटाना, you know, एक जगह से दूसरी जगह. Move. I moved from the second bench to the first bench. Move. मैं उठकर कहीं और जाके बैठी. Move. मैं हट गई वहां से. Move. You know, movement. Move. Move का adjective form is movable. Movable. These furnitures are movable. इन फर्नीचर्स को आप लोग हटा सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं. मूवेबल. सो फर्नीचर जो कि नाउन है उससे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे एज मूवेबल, कि इसे हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज इजीली मूवेबल, राइट? सो verbs can also be turned into adjectives when times are needed. Okay, good. Another fun little thing that we do with adjectives are basically this. कि adjectives एक word जो already noun को describe कर रहा है, हम adjectives का भी दूसरा adjective forms ला सकते हैं. जैसे कि tragic, you know, tragic. Tragic is an adjective. He has a tragic life. He has a tragic life. Tragic is an adjective. Tragic means, you know, dukh dard at times, you know, extreme suffering. कोई suffer करता है, तो that is tragic. But tragic का एक और adjective form है, tragical. Tragical, right? So tragic is already an adjective, but tragical is another form of the adjective tragical. Now, what does tragical or tragically mean? It sorry, not tragically, tragical, tragical, right? Matlab, it is related to a tragedy, no, some form of a tragedy, right? He took a tragical view of events. Matlab, he saw the event
as something related to a tragedy. So tragic, which is already an adjective, can have another form of it as an adjective, that is tragical. Right? ऐसे और सारे examples है जैसे white, whitish, black, blackish, like that. Right? Good. So finally, we also have degrees of adjective, degrees in adjective, मतलब कितने डिग्री तक वो उसे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. So degrees of comparison, कैसे कंपेयर करते हैं. If I say, for example, the mango is sweet. The mango is generally sweet, हाँ वो मीठा है. But the mangoes I got yesterday were sweeter. Were sweeter. कि जो ये मैंगो दिस इज स्वीट, बट कल जो मैंगो मैंने लाया था ना वो इससे भी ज्यादा स्वीट था. तो आई एम कंपेयरिंग बिटवीन द टू मैंगोज कि इससे ज्यादा स्वीट तो ये था. और फिर कोई आके मुझे बोला कि नो, अल्फांसो इज द स्वीटेस्ट मैंगो. अल्फांसो जो टाइप ऑफ मैंगो है वो सबसे ज्यादा मीठा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता उसका. सो हो गया डिग्री, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, कंपैरिजन के. सो जो तीनों टाइप्स मैंने बताए उसे हम लोग अगर ग्रामर में पुट इन करें तो होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री स्वीट, द बेस लाइन ऑफ कंपैरिजन, एकदम बॉटम लाइन. कंपैरेटिव उससे थोड़ा ज्यादा, तो जैसे स्वीटर. सुपरलेटिव सबसे ज्यादा, स्वीटेस्ट, है ना. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे. इसके बहुत सारे क्या कहते हैं उसे, एक्सेप्शंस भी है. जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट. वैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट. काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट. यंग, यंगर, यंगेस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. Right, but एक और एग्जांपल है ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, है ना. बट यहाँ पे हमने क्या किया कि पॉजिटिव जो एडजेक्टिव था वैसे रहा. कंपैरेटिव में वी आर एडिंग ER, 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 है ना. ब्रेवर, स्वीटर, स्मॉलर, टॉलर, बोल्डर, ER. और अगर सुपरलेटिव के लिए वी आर एडिंग एस्ट, ST, ST वी आर एडिंग, है ना. ST या EST वी आर एडिंग. सो स्वीटेस्ट, स्वीट प्लस EST, स्वीटेस्ट. स्मॉल प्लस EST, स्मॉलेस्ट. ब्रेव प्लस ST, ब्रेवेस्ट. वाई, क्योंकि ब्रेव के लास्ट में ऑलरेडी एक E है ना. वाइटेस्ट प्लस वाइट प्लस ST. क्यों और एक्स्ट्रा ई नहीं जोड़ते वहां पे, बिकॉज व्हाइट के लास्ट में ऑलरेडी एक ई है, तो डबल ई देने की कोई जरूरत नहीं. तो बट अगर जो पहला पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जो पॉजिटिव वाला है, जैसे कि हैप्पी ले लो या फिर स्वीट, हैप्पी या स्वीट, ये दोनों एग्जांपल आप कीप इट इन योर माइंड. हैप्पी, हैप्पी किस लेटर से एंड कर रहा है, वाई, वाई. और स्वीट इज एंडिंग विद अ T. सो अगर कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव है वो Y से एंड करता है, तो उसका जो कंपैरेटिव फॉर्म है Y को हटा के हम लोग IER ऐड करते हैं. सिर्फ ER ऐड नहीं करते, IER ऐड करते हैं. सो हैप्पी, हैप्पियर, इजी, इजियर, हैवी, हैवियर. राइट, सब वाई से एंड करा है, इसलिए HAPPIER, नॉट जस्ट HAPPYER, IER. Why? Because the word, the adjective is ending with the Y. Superlative के लिए भी same. We do not just add EST. सिर्फ EST add करने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा. We have to replace the Y with an I and add EST. So happiest, HAPPIEST, HAPPIEST. Right? वैसा.
अब बहुत जगह है जहाँ पे यू हैव टू चेंज, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट. सो BIG बिग, BIGGER बिगर, BIGGES biggest. Hot, hotter, hottest. HOT hot, HOTTER hotter, HOTTEST hottest. So double D, double G, double T. तो दीज आर एक्सेप्शंस, और ये प्रैक्टिस करते करते होगा, एक दिन में आपको सब याद नहीं रहेगा. और एक और टाइप से जैसे हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव करते हैं इज ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल को हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा नहीं होता, राइट? क्या होता है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. यहाँ पे तो कुछ 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 एक्सेप्शंस है जहाँ पे एस कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST लगाने से नहीं होता. जैसे डिफिकल्ट, 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 डिफिकल्टेस्ट तो ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने. क्या सुना होगा ना, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. करेजियस, करेजियस, करेजियस और करेजियस्ट, ऐसा तो नहीं होता. करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, है ना, ऐसे. एक और इफ आई गिव अनदर एग्जांपल इज जो बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है कि जहाँ पे ऐसा मतलब मोर, मोस्ट भी नहीं लगता और कहाँ पे ER EST लगेगा, इज वेरी डिफिकल्ट. सो जैसे इफ आई से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से bad, he's a bad person, bad. It's not bad, bad or baddest. Like people use it, but baddest, badder, grammatically we don't use it. It's bad, worse, worst. Bad, worse, worst. So यहाँ पे comparative is worse and superlative is worst. तो यहाँ पे SEST मतलब बैड से तो completely change हो गया. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स में. आप कोई भी एडजेक्टिव लेके ट्राई कर सकते हो जो हेल्प करेगा आपको समझने में. कुछ एडजेक्टिव्स को हम लोग ऐसे डिग्री में ला सकते हैं टू कंपेयर बिटवीन द टू ऑफ देम. सो basically we use that kind of a drill. So you know that is how that comparison is used. ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना बैड का, बैड, वर्स, वर्स्ट. इफ आई से इविल, इविल का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बताओ. इट्स नॉट इविल और इविलेस्ट, नो, इट्स इविल, वर्स, वर्स्ट. इल, इल, यू नो, इल का क्या है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव? इट्स नॉट इल, इलर, इलेस्ट, इट्स इल, वर्स, वर्स्ट. तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है इधर ग्रामर में कभी कभार, राइट? एक और एग्जांपल जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है इज मेनी, है ना. मेनी इज नॉट मेनियर एंड मेनीएस्ट, इट्स मेनी, मोर, मोस्ट. मेनी, मोर, मोस्ट. द थिंग इज इन सारे वर्ड्स का मतलब हमें पता रहता है. जो हमें नहीं पता रहता है कि किसे क्या कहते हैं, राइट? अगर मेनी है एडजेक्टिव तो मेनी इज द पॉजिटिव वन. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या होगा? मेनी और मेनीएस्ट नहीं होता, होता है मेनी, मोर, मोस्ट. मेनी, मोर, मोस्ट, लाइक दैट. एक और जहाँ पे हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं इज ओल्ड, राइट? ओल्ड, older, oldest. Also old, elder, eldest, right? Eld कोई word तो होता नहीं, so old, older, oldest या old, elder, eldest, right? Little, little is not littler or littlest, it is little, less और lesser. So comparative में आप less भी लिख सकते हो या lesser भी लिख सकते हो. So little, less और lesser, और superlative is least, least. एक और common example है जहाँ पे ER और EST is not enough, ER और EST is not enough is good. So it's not good, gooder,
goodest. It's good, better, best. Good, better, best. So better is the comparative and best is the superlative. So ऐसे कुछ exceptions. Otherwise, the general formula is comparative के लिए last में er add होता है और superlative के लिए est add होता है. कुछ और exceptions would be up, upper, upmost or uppermost. We don't say up, upper, uppest. It's up, upper, up, upper, uppermost or upmost. Same with out, out, outer, utmost or uttermost, not outest. Okay, so out, outer, utmost, right? So these are a few exceptions that we have in English grammar when it comes to comparison in terms of adjectives, right? कुछ और अगर हम लोग examples ले तो marry, MERRY, marry. So मैंने बोला अगर adjective के last में y है तो y must be replaced with I. तो merrier is MERRIER, merrier, and merriest is MERRIEST. So merry, merrier, merriest. This is an example. Again, wealthy, wealthy. So wealthy also y, wealthy ends with a y. So wealthy, y will be replaced by I for the IER for the comparative degree. So wealthy, wealthier, WELTHIER, wealthier, and the superlative form is wealthiest, WELTHIEST, wealthiest. So wealth, wealthier, wealthiest, and this is kind of, it forms the basis of कि अगर y रहता है, so y must be replaced with an I when we are doing this superlative comparative degrees. Okay, normal examples are like large, large, larger, largest, wise, wiser, wisest, kind, kinder, kindest. These are pretty normal examples. So yeah, so adjectives, this is the basic formula for understanding adjectives. So yeah, we'll learn about pronouns in the next class.